How to install MySQL on Windows 11. So let's start. So you can open any browser on your machine. मैंने यहाँ पे Google Chrome open किया है. So type here MySQL download and search here. So you can see here यहाँ पे MySQL की official website open होती है. So click on this website. क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन शो होगा. So click on this download. क्लिक करने के बाद go to down. Then click on MySQL community. So you can see यहाँ पे different ऑप्शन शो होंगे. So click on MySQL installer for Windows. क्लिक करने के बाद MySQL यहाँ पे डिफॉल्ट ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सेट करके रखता है. So यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो होंगे लाइक MySQL installer web community and second one is MySQL installer community. So हमें MySQL installer community इंस्टॉल करना है. So click on download. डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यू कैन सी हियर टू ऑप्शन लाइक लॉगिन एंड साइन अप. सो क्लिक ऑन नो थैंक जस्ट स्टार्ट डाउनलोड. सो यू कैन सी हियर यहाँ पे हमारा MySQL इंस्टॉल हो रहा है. सो इट विल टेक अ टाइम. देन गो टू डाउनलोड्स. So you can see here MySQL installer successfully. So click on this file. Then click on yes. Then again click on yes. It is in process. So you can see यहाँ पे different options शो होंगे like server only, client only and full and custom. So click on custom, then next. So you can see यहाँ पे 3 options शो होंगे. So हमें server, workbench और server install करने. So click on server. Click on MySQL server 8.0.36 and drag. So click on MySQL server and then drag. Then click on application, workbench and then drag. Then next click on shell and then drag. And then next, if you want to change path, so you can change also. Then next. So यहाँ पे हमें ready to install करके शो होगा. So click on execute. So you can see here. So आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रोसेस इज कंप्लीट. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. सो एग्जीक्यूट होने के बाद यू कैन सी दिस स्क्रीन टाइप एंड नेटवर्किंग. इफ यू वांट टू चेंज पोर्ट सो यू कैन चेंज ऑल्सो. देन नेक्स्ट. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. सो यू कैन सेट पासवर्ड लाइक मैंने यहाँ पे रूट सेट किया. देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट एंड देन एग्जीक्यूट. तो यहाँ पे हमारा MySQL इज इन प्रोसेस. So it's completed. Click on finish. Then next. Then finish. So you can see here यहाँ पे So you can see here MySQL install successfully. Then go to C file. Program files and you can see here MySQL install successfully. So copy this path, open environment variable, then click on path, click on new, paste this path /bin, then OK, then OK, then OK. You can open cmd on your machine like cmd and write command like MySQL --, version and enter MySQL -- version, then enter. So you can see here MySQL connected, MySQL install successfully.
If you want to connect MySQL, so you can write command MySQL hyphen username like root hyphen password, then enter and enter your password root. So you can see here our database connected successfully. If you want to create any database in your database, you can write command like create database, for example student, and then enter. So you can see here our query executes successfully. If you want to show database, so you can write query show database and enter. So you can see here this is our database in the Workbench. If you want to check database in your Workbench, so you can open MySQL Workbench, click on this, click on local instance, then वो आपको पूछेगा पासवर्ड. सो यू कैन राइट योर पासवर्ड एंड देन क्लिक ऑन ओके. क्लिक करने के बाद हमारा वर्कबेंच ओपन सक्सेसफुली. देन गो टू स्कीमा. सो यू कैन सी हियर हमारा स्टूडेंट का डेटाबेस शो होगा. इफ यू वांट टू राइट योर क्वेरी, सो गो टू क्वेरी सेक्शन एंड राइट हियर क्रिएट डेटाबेस. Create database like employee, and this execute this command. So you can see here employee database created successfully. If you want to learn more things related to MySQL, so you can follow my channel like how to create table, how to create database, how to insert and update query. So I can upload this video in my channel also. So thanks for watching my video. Please like and subscribe my channel. Thank you.